Hello, everyone. Good evening. Good evening, Wishi, the most awaited session indeed. Good evening, Janardhani, Mohit, Komal, Sankrish, Shrishti, Ritesh. Good evening, Maitri, Vedant, Dipanshu, Pratham, Shiva, Rajendra. Radhe Radhe. अब भगवान का नाम लेके कोई भी सेशन शुरू करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल, राइट? गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग विशी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग विशाल, दीप्ति, आरती। अरे बाप रे, इतनी जल्दी जल्दी आप लोग लिख रहे हो, मुझे लग रहा है मेरे से ही नाम छूटते जा रहे हैं। ओके एवरीवन, भाई कैसे हो आप लोग? एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू नो इज हाउ इज योर प्रिपरेशन। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि मैम की आवाज़ को क्या हो गया है अचानक से, बट आई एम डाउन विद कोल्ड, सो होप यू बेयर माई वॉइस। ओके, yes, everyone. Good evening. कैसी चल रही है preparation? How is your preparation going on? You have examination day after tomorrow, right? Today is 13th. Tomorrow is 14th, where we'll have another live session. And on 15th, you have your examination, CMA Final Law. Oh my God. Lots of love from South Indian students. Thank you so much, Karthik. Good evening, everyone. अरे good evening से आगे बढ़ो. I want to know how is your preparation going on. Good to see you, ma'am. Thank you so much. Good to see you all here. Yeah, ma'am, good, but preparing with your chart only. Okay. Janardhani. मैम आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी बहुत काम दिया. Happy to know that. Okay, so someone is happy with the chart, someone is happy with the revision strategy. छोड़ छोड़ के मत जाना एग्जामिनेशन में. Focus that you cover the entire subject. Okay. Wish me luck, my best wishes are with all the students. Ma'am, corporate governance questions are so helpful. Thank you for it. I hope everyone, for the students who might be attending my session for the very first time, it's just a gentle reminder to everyone that we have recently posted a lot of things, a lot of sessions for the upcoming examination. Hope you have taken full advantage of it. And that's very thoughtful analysis of everything that I have made. Even when the students are talking about corporate governance questions, they are not picked up from the scanner that, okay, fine, these questions have been asked. No, some questions have become irrelevant, even if you see it from the scanner. Okay, so make good use of everything. Chart is above the bench. Thank you so much, ma'am. Thank you, Nitesh. Ma'am, your words are totally in mind. Great. Yes, strategy is good. You are the best, ma'am. Good going, ma'am. Though I'm not your student, but I loved your marathon. Happy to know that. Definitely, when we're taking sessions on YouTube, it's not just to serve our registered students, but to serve the entire student community in CMA Final. Why do you fall sick during our exams, ma'am? I don't know, but you should take inspiration from that circumstances are never the same, right? Even when you are going for your examination, there may be circumstances which are not in your favor, but still you have to get going, right? So many times students complain that, ma'am, I felt sick, or this particular thing happened, but then you have to deliver your best. And here I am trying the best from my end, and you have to give the best from your end, right? You will make me proud. Everyone, come on. One like for the session. We have around 270 students watching the session currently. So I want at least 250 likes and we begin the session. Thank you, ma'am, for compilation of question bank, especially chapter wise. Happy to know that. Following you since foundation. Okay. Ma'am, please clear about surfacey. What you want the clarification about surfacey, Piyush? I didn't get your question. Your marathon video made me boost confidence. Okay. See, Chandrasekhar Chand has told something that I will depend on your important questions, ma'am, totally. See, one clarity I want to give right away, that important questions, I have always told you that they are in addition to your preparation. They are never the replacement of your preparation, that, ma'am, okay, I'll study only this and I'll go for examination. Here I am shattering your confidence. You may not even pass. Okay, so please keep this in mind, that these are the questions we expect. These are the questions which help you revise the surrounding portions or provisions or sections. These are the questions which have been repeated, right? So important questions are definitely important, but that doesn't mean they can replace the entire preparation. So you have to prepare that for sure. Okay. I asked that clarification from Piyush, right? Piyush, you were talking something about surfacey. Please tell me, what are you asking about surfacey?
Everyone hearing your voice only at home, always, because marathon will be running. Great, fine. Being CA and CMA final student, I study Surface in CMA final. Do we need to do Surface because it's been removed in CA syllabus? Yes, it has been removed in CA syllabus, but it will be there. It is still there in CMA syllabus, so you definitely have to study Surface. Okay, you may prioritize it at a later point of time, but you have to study it. Intermediate में MCQs कहाँ से करें? You can check the material, you can check the question bank. Confused about Surface because I have not studied and a little bit underconfident in that. Rest I am confident. Okay, fine. Piyush, what you can do is, acha, I'll deal with this later. Fine. Ma'am, I have a doubt in dividend. Issue dividend in case of loss in previous financial year. Yes, of course you can. Producer company, what are you asking about producer company? See, actually, there is producer company is not applicable in the new syllabus. It is not applicable in the old syllabus. Producer company is there. Okay, in 2016 syllabus it is there. In new syllabus it is not there. Ma'am, last time I missed. Okay, now let me hold this chat because there are a lot of students who are asking a lot of different questions and it's difficult to deal with that. मैम डर लग रहा है बहुत, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, बट डर थोड़ा अच्छा होता है. डर के साथ डरना नहीं है, डर के साथ और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. Let's wait for that clarification. Okay, please help in Karo revision, ma'am. In Karo, I have in fact incorporated a question in Super 30 subjective questions also. Mainly what you should focus with is Karo applicability. Okay. And in general, if the question comes, you can have a quick reading and you will be able to write that. Okay. No, dividend is declared at AGM. Okay. Otherwise, it is interim dividend, which is declared by the board. In between AGMs, interim dividend is declared. SEBI loader concept is different in CA and CMA. See, the concept remains the same, but yes, you can say the coverage is not entirely the same. I didn't study much. I just have idea of concepts. Okay, fine. Stop. ऐसे तो हमारा सेशन ना शुरू भी नहीं हो पाएगा. One more time, I'm asking all the students, let's like the video. एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो. And I am now going to commence the session. In case I can see half the students have liked the video. मतलब 350 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, 150 लाइक दिख रहा है मुझे. मतलब इतना सा भी प्यार नहीं है मेरे से. अगर प्यार है तो दिखना चाहिए ना. Come on everyone, like the video and we will begin the session. I know your mind is filled with doubts and I really genuinely want to address each and every doubt, but ऐसे बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगा. And the students who have come here for the session, उनके लिए कहीं ना कहीं injustice हो जाएगी. So what we'll do is, we'll wrap up the session quickly. Because it is a revision session only, so we are not going to get into concepts in this particular session. And after that you can drop in the comments. Okay, or on comments ke through we will give you reply. Okay, if it is possible, then I can stay here also. Like, done. Thank you everyone. Chalo bhai. Everyone is not just targeting exemption, but I would say our target for this examination is 70 plus in CMA final law. 70 plus is a decent score which you can very well get, right? Okay, good evening everyone. Here we commence with the session. Now maybe you will say that we haven't received the file, ma'am. Where is this PDF? Where to study from? You don't need to do anything. All you have to do is look at the question on the screen. And I don't want this particular chat to stop at any point of time. आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 में से एक ऑप्शन लिखना है, आपने लिख दिया और वी आर क्रिएटिंग अ पोल एंड यू आर आंसरिंग थ्रू द पोल. नो भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो, व्हाट कम्स टू योर माइंड, व्हाट इज दैट यू हैव टू राइट, और वो आप चैट में लिखना शुरू करोगे. इफ
there are 350 students or 400 students who are watching this particular video and they're continuously writing in chat. It is not going to stop. तो chat हमारी इतनी क्विक होनी चाहिए कि बस आप अपनी कंटेंट लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो. You're listening to me and you're writing on the chat. This is how you. हाँ, और ये नहीं बोलना मैम चैट पर टाइप करने में बड़ा वो होता है. जब बातें करते हो इधर उधर इससे उससे 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 तो 4 लोगों से एक साथ बात कर लेते हो टाइप कर करके, और यहाँ पे टाइप करने में बड़ा जोर आएगा. सो नो. Okay, so you read the particular question on the screen and you start thinking कि इस particular question में मुझे क्या क्या लिखना होता है या क्या क्या पॉइंट थे, और वो सारे पॉइंट शॉर्ट में रिकॉल करके आपको टाइप करते जाना है. डजंट मैटर अगला क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, हमें दूसरे की चैट नहीं पढ़नी. ऑल वी हैव टू फोकस इज ऑन आवर ओन सेल्फ. फाइन एवरीवन, चलो. Great. Insolvency professional and resolution professional are same. It is appointed. Insolvency professionals are appointed as that. Wish us good luck. Good luck to everyone. Is it important to remember all the current and capital account transactions? See, the concept of current and capital is important. Okay. How many questions will come in exams from the Super 30? Wow. One big round of applause for Sahil Sheikh. How many questions will come from the Super 30? I have set the paper. If I would have set the paper, I would have given you the entire paper. क्या भैया ये पढ़ लो और ये पढ़ के पास हो जाओगे. So if you are here with this particular mindset कि इसमें से कितना आएगा मैम, ये सारे के सारे यही आएंगे क्या, then please I would insist you leave the session. ठीक है, मैंने एक बार आपको बहुत क्लियरली बता दिया है. प्लीज ऐसे टाइप के वीडियो से कभी भी भ्रमित नहीं होना है. Okay, you have to maintain your focus. It is never the replacement of your preparation. If you do not read the entire syllabus, if you do not study what you are supposed to study, then no subjective or no important questions or no set of 30 questions can actually make you through the examination. Fine. This should be clear, absolutely clear in your head. Okay. बहुत स्ट्रिक्टली ये बात मैं बोल रही हूँ. आप लोग शायद पहली बार मुझे ऐसे देख रहे होगे बोलते हुए, बट मैं ये बहुत क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी ना पढ़ाई से भागा मत करो. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों के पास होता है अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम हेल्प करना चाहते हैं. ठीक है, पर कभी भी हम आपको मिसगाइड नहीं करना चाहते हैं. सो डोंट बी मिसगाइडेड विथ दीस टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, चलो फाइन, लेट्स स्टार्ट द सेशन एवरीवन. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ तो दिख ही जा रहा है. Demonstrate the prohibited items of LRS and briefly explain what is the rationale for such regulation. Okay, so we have a kind of direct question and I want everyone to please start writing. भाई लिखोगे तो हिंदी इंग्लिश में ही ना, लिखना शुरू करो. Prohibited items of LRS. What is LRS? Liberalized Remittance Scheme. We have a limit, we all know, $250,000 US. We also have been recently introduced the concept of TCS, but वो सब हमको पढ़ना नहीं है यहाँ पे. हमको LRS का एक बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए एंड वी शुड नो अबाउट द प्रोहिबिटेड आइटम्स जिसके लिए हमको LRS नहीं मिलता है. वी कैन विड्रॉ अप टू $250,000 विदाउट द परमिशन ऑफ RBI. दैट्स व्हाट LRS इज ऑल अबाउट, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. इसके पीछे का रैशनल क्या है बिहाइंड सच रेगुलेशन, दैट इज ऑल्सो वी हैव टू राइट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोहिबिटेड आइटम्स लिखने हैं. आई कैन सी नन ऑफ द स्टूडेंट हु इज राइटिंग इन द चैट. भाई ऐसे तो नहीं चलेगा. इफ यू एक्चुअली वांट कि आपको सेशन बेनिफिट दे तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी. राइट एवरीवन, एक भी आइटम अगर आपको नहीं पता है कि क्या प्रोहिबिटेड है LRS में, तो फिर क्यों हम यहाँ पे बैठे हैं. परसों आपका एग्जाम है, डे आफ्टर टुमारो यू हैव योर एग्जामिनेशन. प्रोहिबिटेड आइटम ही पूछ रही हूँ. somebody is writing prohibited item. Come on, everyone. Okay, fine. Remittance, okay. Great. Now something I'm getting. Remittance of lottery winning, or you can say lottery ticket, or you can say gambling, you can say sweepstakes, you can say some prescribed magazines which are banned, right? We have मार्जिन किसको बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज पे मार्जिन मनी देते हैं ना, वैसे ही ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज पे मार्जिन या मार्जिन कॉल्स, मतलब इफ इट फॉल्स बिलो देन यू कॉल फॉर दैट अमाउंट. सो मार्जिन कॉल्स होते हैं हमारे, राइट. परचेज ऑफ FCCBs, वेरी गुड. नाउ आई कैन सी, कैन वी राइट इन शॉर्ट? डेफिनेटली यू कैन राइट इन शॉर्ट. आप जैसे लिख रहे हो, आई एम एक्चुअली लविंग इट,
राइट, तो आप इस तरीके से आराम से लिख सकते हो. देन सम रेमिटेंसेस टू कंट्रीज जहाँ पे विच आर एड्रेस्ड एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज. राइट राइट राइट, वेरी गुड, एक्सेलेंट. ट्रेडिंग इन अब्रॉड, वेरी गुड. सो ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड, तो इन चीज़ों के लिए LRS परमिटेड नहीं होता है. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड सच रेगुलेशन. सी, इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर एंगल कि LRS किसके लिए बना हुआ है. LRS इज नॉट मेंट फॉर कंपनीज और नॉट मेंट फॉर कॉर्पोरेट्स और नॉट मेंट फॉर HOFs. जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है दैट इज फॉर इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं भाई, मेडिकल है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड फॉर एवरीथिंग यू कैन नॉट सीक दैट परमिशन, राइट, which includes minors, right? So it is for them, and this LRS is also consistently revised from time to time. तो इसका मेन जो फोकस है या मेन जो पर्पस है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इज टू प्रोवाइड ईज टू द इंडिविजुअल्स इन अंडरटेकिंग सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस अब्रॉड, राइट. चलो, excellent everyone. See, this answer is slightly different for both set of syllabus and you have to work according to your own syllabus. इससे मैं एक बात आपको और बोल दूँ, ये पूरी की पूरी जो फाइल है, is it for 2016 syllabus or is it for, why am I showing you the answer, is it for 2022 syllabus? ये आपको ध्यान रखना है. This whole session is for both the syllabus. We have five not exclusive questions, I would say, for 2016 and 2022 syllabus. 2022 syllabus, they're mostly picked from the MTPs because we don't have very common questions of 2022 syllabus क्योंकि नया आया है. 2016 syllabus में अलग questions है, तो वो आप खुद से पढ़ सकते हो. In this session we are going to discuss 25 questions which are relevant for both syllabus, both set of students. Okay, right. Moving to the next question, elaborate the procedure of winding up of banking companies. Come on, everyone. Winding up of banking companies, how banking companies can be wound up, right? It is there in both set of syllabus, right? So 2016 and 2022. Please don't get confused. You have read the entire thing. You should be able to recall. If you're not able to recall, don't panic. Just put a star over there that this is the question that I have to review later. Okay. Now, प्रोसीजर क्या है वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनीज का. कम ऑन एवरीवन, स्टार्ट राइटिंग. अगर बैंकिंग कंपनी, राइट, एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस, वेरी गुड कृष्णा पटेल, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम रीडिंग. अब कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है वाइंडिंग अप इज स्टिल एप्लीकेबल. बस आपने वाइंडिंग अप देखा तो आपको लगा कि ये तो वाइंडिंग अप चैप्टर का ही क्वेश्चन है. We are talking about the banking company. So this is not a question which comes from Companies Act, beta. This is a question which comes from banking companies. And secondly, अगर हम winding up की बात करें तो in 2016 syllabus you still have the provisions applicable for winding up और उससे question भी आता है. तो आप ऐसे बिना पढ़े winding up को नहीं जा सकते हो. In the new syllabus we don't have that, but in the old syllabus we have. In fact, I have put another question, winding up of unregistered company जो foreign company से related होता है, which is there in both set of syllabus students. तो वो क्वेश्चन तो रिसेंट में आपके MTP में भी आया हुआ है, तो हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. Prohibited to accept deposits, wonderful. If it is not complying with minimum paid up capital and reserves, wonderful. Not does not have the license, fail to comply with the requirement of the act. And what else? अच्छा, एक मेरा आपसे एडिशनल सवाल है. One additional question on this particular point, can a banking company be wound up voluntarily? मतलब आज मैंने एक बैंक खोला, मेरा बड़ा मन था कि मैं एक बैंक खोलती हूँ, चलो मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मैंने बैंक खोल लिया सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करके, और बैंक अब मैं बंद करना चाहती हूँ. कैन आई शट डाउन द बैंक एज एंड व्हेन आई वांट? मतलब एक कंपनी वॉलंटरली बंद हो सकती है ना. मैंने कंपनी खोली, मैं बंद करना चाहती हूँ, मैं बंद कर दी. तो क्या एक बैंक भी अपनी मर्जी से बंद हो सकता है? क्या बैंकिंग कंपनी भी शट डाउन और वॉलंटरली बी वुंड अप? Come on everyone. Well done, you're writing wonderful provisions. कोई बोल रहा है no, कोई बोल रहा है yes, कोई मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं मेरे को no. You're absolutely correct. Banking company cannot be voluntarily wound up unless RBI सर्टिफाई करता है कि आप अपने एक एक डेट को पे कर पाओगे. यार लोगों का पैसा आपने भरा हुआ है, आप उनका पैसा पे नहीं करोगे और आप बंद करके निकल लोगे. आप बंद कर दोगे, बोल दोगे नहीं हमारे पास एसेट सफिशिएंट नहीं है टू पे, अब तो हम क्या करें, हम तो 4 रुपए का 1 ही रुपया देंगे. नहीं, RBI विल नॉट लेट दैट हैपन. ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है.
Okay. Right, right. Unless RBI certifies, unless it is able to pay all its debts. Very good. Moving to the next question. Question number 3. Asset reconstruction company क्या होती है? Enumerate the measures for this particular purpose. What is asset reconstruction company? What is asset reconstruction company? देखो, asset reconstruction company, if we talk in general, you can write the general meaning also and you can write the definition also. In general, if we talk, then what does it do? It buys the NPAs of bank, है ना, bad debts जो या NPAs होते हैं उनको खरीद लेते हैं, है ना. Otherwise, अगर हम बात करें, it is something or it is a company which is registered with Reserve Bank, which is registered with RBI for the purpose of carrying asset reconstruction and securitization or both. या तो asset reconstruction करते हैं या securitization करते हैं या दोनों करते हैं. What is more important is that it should be registered with RBI, है ना. तो ये दो चीज हमको ध्यान रखने होते हैं. अब ये asset reconstruction कैसे करते हैं? Section 9 measures for asset reconstruction. So we have a list of measures. तो यहाँ पे फटाफट से मैं देखूं कि कौन कौन है जो measures लिख सकता है. Come on everyone. How many of you can write the measures of asset reconstruction? Wonderful. Measures of asset reconstruction. You can change the management या टेक ओवर. आप पेमेंट्स को रीशेड्यूल कर सकते हो. You can enforce the security interest. You can settle the dues. राइट. यू कैन कन्वर्ट सम पोर्शन ऑफ डेट इनटू इक्विटी कि भाई इतना नहीं पे कर पा रहे तो इनको इक्विटी दो, हमारी डेट रिड्यूस हो जाएगी. राइट. सो जो भी हमारी वो पर्टिकुलर कंपनी होती है या वो पर्टिकुलर बिजनेस होता है ऑफ द बोरोअर, उसमें हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं. दीज आर द मेजर्स विच वी अडॉप्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द एसेट. वंडरफुल. वेरी गुड. Great everyone. So happy to see the active participation that you are doing. जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन बच्चों को आता है, जो बच्चे एक्चुअली फोकस कर रहे हैं ऑन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, उन्हीं के मेरे को आंसर्स यहाँ पे दिखेंगे. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्कस द क्लास ऑफ कंपनीज दैट आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ कारो. जो आप पूछ रहे थे ना मैम कारो के लिए बता दो, ऐसी कौन सी कंपनीज जो कारो के परव्यू में नहीं आती हैं, मतलब जहां पे हमें कारो की रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है. You all know about Caro, companies audit report order. So we have the entire list of Caro जिसपे auditor has to additionally report on those matters, right? But there are certain companies which do not fall under this criteria. The very first one, very good, it is banking company. The second one, insurance company. The third one, OPC, and fourth one, small company. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक private company which satisfies certain conditions. Which conditions? It should not be holding a subsidiary of a public company, right? It should not have a paid up capital or you can say a private company. नहीं. आप लोग चेक करो, बहुत सारे बच्चे ना इसको थोड़ा सा कुछ अलग अलग भी लिख रहे हैं. Mostly are writing it correct, but some are writing it incorrect also. Private company having paid up capital and reserves and surplus not more than 1 crore. Borrowing exceeding 1 crore and a private company which does not have a total revenue exceeding 10 crore. ठीक है, तो हमारी ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन वी कैन से द प्राइवेट कंपनी इज, उनके ऊपर भी कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है. यहाँ पे एक चीज मैंने और बोली है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल कंपनी, देन डेफिनेटली आई वांट यू ऑल टू नो कि स्मॉल कंपनी की लेटेस्ट लिमिट क्या है. होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. व्हाट इज द लेटेस्ट लिमिट विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्मॉल कंपनीज? कम ऑन एवरीवन, राइट इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज द लेटेस्ट लिमिट विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्मॉल कंपनीज? क्या है? 50 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 4 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, क्या है? What is the latest limit which has been prescribed for small companies? Come on everyone. 4 crores and 40 crores. Excellent. Okay, so I can see a unanimous answer. मतलब किसी ने भी 2 करोड़ और 20 करोड़ नहीं लिखा. I'm happy to know that and happy to see that. नहीं, 10 और 100 नहीं है. प्लीज रेक्टिफाई दैट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप
for formation of a one-person company in the light of provision of Companies Act 2013. Moving to the next question, question number 5. One-person company के बारे में हमसे पूछा गया है कि how a one-person company is being formed. Well, the process of incorporation is the same, and we are not supposed to elaborate the entire process of incorporation कि भाई पहले हम नाम रिजर्व करते हैं और ये सब करते हैं, because यहाँ पे हमसे one-person company के स्पेसिफिकली बारे में पूछा गया है. तो वन पर्सन कंपनी की जो स्पेसिफिक बातें हैं, वी हैव टू इंश्योर दैट वी राइट दैट हु कैन फॉर्म अ वन पर्सन कंपनी. इट हैज टू बी अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, राइट. दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन फॉर्म और इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी. One person company के memorandum में there has to be the name of a nominee who will become the sole person in the event of death of the subscriber, है ना. तो वो बन जाते हैं. वो पहले अपनी रिटन कंसेंट देते हैं. दे कैन ऑल्सो विदड्रॉ द कंसेंट. यू कैन ऑल्सो चेंज द नॉमिनी एज एंड व्हेन यू नीड. जो कन्वर्शन वाला पार्ट होता था दैट हैज बीन डिलीटेड, सो यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट कि वॉलंटरली आप कभी भी चाहो तो यू कैन कन्वर्ट वन पर्सन कंपनी, बट यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू सेक्शन 8 कंपनी, एंड सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, राइट. इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एंड इट कैन ऑल्सो नॉट कैरी आउट एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी कैरी आउट नहीं कर सकते. अगर ऐसा कभी भी होता है दैट द सोल पर्सन बिकम्स the sole member of another company by the virtue of its being nominated in such company, then it gets the span of 180 days कि आप choose कर लो which company you want to continue, right? Okay everyone, चलो बहुत अच्छी बात है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ बिफोर वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस? जो लिख रहे हैं प्लीज वही बताना, जो ऐसे ही बैठे हुए हैं वो प्लीज मुझे ये आंसर बताना भी मत, बिकॉज इन दैट वे आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, राइट. तो एनी वन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट आंसर राइटिंग, आप भले ही चैट पे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, कैसे भी लिख रहे हो, स्पेलिंग गलत है, सही है, इट डजंट मैटर, बट व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग योर थॉट्स, यू आर चैनलाइजिंग योर थॉट्स एंड पुटिंग इट इनटू द कमेंट्स, तो आपको कैसा लग रहा है? इज इट हेल्पिंग? Is it helping you gain that confidence? Yes or no? Come on everyone. Yes or no? Less than 3 years cannot convert. ये provision पहले था, अब नहीं है नम्रता. Right? Okay, I can see. Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. Wonderful. अरे ये कहाँ चले गए हम? जो भी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे नहीं आया या यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो पुट अ स्टार और उसको सेशन के बाद आप फिर से रिवाइज कर लेना. Right? Okay, somebody's term is December 23, but he is here with us in the session and actually gaining confidence. Chalo, good for you. Question number 6, discuss the applicability of IBC. IBC किस पे applicable होता है? कई बार हमसे ऐसा भी पूछा जाता है that IBC किस पे applicable नहीं होता है, like financial service providers and like things, right? बहुत सारी चीज लग रही होगी ना कि unable to recall also. लग रहा है कि ये पढ़ा हुआ है बट नहीं रिकॉल कर पा रहे. यही होता है हमारे साथ एग्जामिनेशन में भी. सो इट इज़ गुड कि आप ऐसे एनवायरनमेंट से गुजर रहे हो. खैर, किस पे एप्लीकेबल होता है आईबीसी? वी हैव बीन आस्क्ड अ डायरेक्ट क्वेश्चन. कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट पे कंपनी पे लगता है, कुछ स्पेशल एक्ट से गवर्नड होती है उस पे लगता है, एलएलपी पे लगता है, बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है, पर्सनल गारंटर्स पे लगता है, पार्टनरशिप फर्म्स पे भी लगता है, इंडिविजुअल्स पे भी लगता है, राइट, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स पे भी लगता है. सो इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन, राइट. वी हैव बीन इन हमारे सिलेबस में क्या है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी फॉर 2016 सिलेबस एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एज वेल एज पर्सनल इंसॉल्वेंसी फॉर 2022 सिलेबस. ठीक है, तो 22 सिलेबस में वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ पर्सनल इंसॉल्वेंसी से हमको कुछ पूछ लिया जाए विद रिगार्ड टू बैंकरप्सी, ट्रस्टी वगैरह. ठीक है, तो ध्यान रखना उसको भी. ओके, moving to the next question, question number 7. What consequences can be there if dividend declared is not distributed? Now remember one thing कि मैंने जब इस तरीके का क्वेश्चन डाला है तो आप इतना समझो कि डिविडेंड से जुड़े हुए जो कंसेप्ट्स हैं आपके ये कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाने चाहिए. अगर सेम क्वेश्चन नहीं होता है, कई बार होता है इसी में आपसे कुछ तरीके की केस स्टडी बना के पूछ दी गई, राइट. बिकॉज इन 2016 syllabus what is evident that there will be more case based questions, and in 2022 syllabus हमने सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही देखे एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्वेश्चन जो हमने केस बेस्ड देखा है ना. तो रिवाइज करो द कंसेप्ट्स, ओके, डोंट फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? अरे वाह, कितने लिख भी दिए, क्या बात है.
डिविडेंड जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, इट हैज़ टू बी पेड विद इन 30 days, राइट. इफ इट इज़ नॉट पेड तो कंपनी को क्या करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है 18% पर एनम. वेरी गुड. एंड एवरी डायरेक्टर who is knowingly a party to the default is liable for imprisonment for 2 years, which may extend to 2 years. मतलब maximum imprisonment is 2 years और फाइन भी लगता है 1000 for every day during which the default continues. वेरी गुड. देर आर सर्टन एक्सेप्शंस ऑल्सो. अब अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 7 मार्क्स का, सो यू विल नॉट एंड ओवर हियर. इट डिपेंड्स कि आपसे क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया. कभी कभी इंस्टीट्यूट ना फेल्स टू टेल अस द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, तो हमें अपने मार्क्स से एसेस करना पड़ता है, लाइक वी डू इन आर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, कि अगर 7 मार्क्स का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, वी कैन नॉट जस्ट राइट दिस मच कंटेंट एंड एंड आर और रैप अप और कंक्लूड आर आंसर. वी हैव टू गो अहेड एंड राइट मोर कंटेंट. तो हमको उसमें और लिखना पड़ेगा कि कंपनी विल नॉट बी लायबल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो सेक्शन 127 में जो हमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, those also we are supposed to write. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 8. फाइन. क्वेश्चन नंबर 8. मिस्टर ए, ये आपको एक नया क्वेश्चन दिखेगा. ओके, एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन, बट आई हैव जेन्युइनली पुट इट ओवर हियर बिकॉज ऑल्दो ये सीएमए इंटर के एमटीपी का क्वेश्चन है, but this is relevant for you also and this is a new question. This is अगर उनके में नहीं आएगा तो आपके में आ सकता है. ठीक है. मिस्टर ए, a national of Nepal, intends to be appointed as a director of ABC Limited, an Indian company. He is desirous of making an application to central government for allotment of DIN. मतलब एक है बंदे मिस्टर ए जो नेपाल में रहते हैं and he wants to become a director in an Indian company. So आपसे पूछा गया है, state the procedure for allotment of DIN to Mr. A and his appointment as a director thereafter. तो मैम क्या बताना है, दो चीजें बतानी है. How DIN is allotted and how or what is the procedure for appointment of director, है ना. तो these are the two things which are being asked. बट यहाँ पे एक एंगल और आता है विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ही इज अ नेशनल ऑफ नेपाल. Recently, we got an amendment and this applies at a lot of places. Company incorporate हो रही है. At that time we talk about the subscriber. या कंपनी बन गई है, उसमें कोई डायरेक्टर आ रहा है. कंपनी इंडियन कंपनी है, इसमें कोई भी इन्वेस्ट करे, कोई भी इसको मैनेज करे या इसमें कहीं से एफडीआई आए, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिवेंट द हॉस्टाइल टेकओवर्स. And that is why every country which is sharing a land border with India, वहाँ से गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट क्लियरेंस के बिना ये सारे काम नहीं होंगे. मतलब आप शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, आप उनके डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, राइट, आप एफडीआई नहीं कर सकते हो. सो हर जगह गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल का मार्क लगा दिया. ओके, सो वॉट एवर यू हैव रिटन, ग्रेट. आपको ये समझना है कि भाई हम DIR 3 सबमिट करते हैं, फीस जमा करते हैं एंड हमको डिन अलॉट किया जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस आवर एप्लीकेशन एंड वी गेट द डिन अलॉटेड, राइट. इट मे ऑल्सो बी रिजेक्टेड इन सर्टेन केसेस. अगर रिजेक्शन होता है वी गेट द चांस टू रेक्टिफाई द डिफॉल्ट एंड एवरीथिंग. बट वॉट यू हैव टू मोर इम्पॉर्टेंटली रिमेंबर इज दैट नो डिन शैल बी जनरेटेड फॉर पर्सन्स अप्लाइंग. मैं दिखाती हूँ. No application number shall be generated in case of person applying for DIN is a national of a country which shares land border with India unless, please remember this very well, unless necessary security clearance from MHA Government of India has been attached along with the application of DIN. तो याद रखना, एग्जामिनेशन में कहीं पे भी अगर आपको दिखे कि लैंड बॉर्डर वाली कोई कंट्री के बारे में आप बात कर रहे हो, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट यू नीड द सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ MHA. इट कुड बी इन FDI ऑल्सो, इट कुड बी हियर ऑल्सो, इट कुड बी इन सब्सक्राइबर ऑल्सो, राइट. चलो, अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री इज नेसेसरी. ठीक है. अब इसके बाद
we move to the next portion. What is the next portion? That is appointment of director. So appointment of director में हमको सारे के सारे provisions लिखने हैं of section 152. Who can become the director? तो first director की तरह आप बन सकते हो. The articles mention your name, right? Thereafter you can be appointed as a director if in general meeting एक resolution pass होता है and you are appointed, but you will not be appointed unless you have a DIN, unless you have given your consent, right? तो सारे के सारे provisions we will write. Moving to next question. Okay, moving to next question. Small company, 4 crores, 40 crores. This was missed by me. Thank you, ma'am, for telling it. Great, Shraddha. Moving to next question. Question number 9. Can a person other than a director be offered a directorship in a company? मतलब जो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, जैसे अगर मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हूं एंड आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर इन से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैन आई? अब बोलोगे मैम देखा भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर बनने चली है ना, बट कैन आई? इज देयर एनी प्रोसीजर? आई स्पीक वेरी लेस हिंदी, नंदू, सो यू डोंट नीड सबटाइटल्स फॉर दैट. वे लिविंग इन नेशन हिंदुस्तान में हम रहते हैं, एक दो वर्ड्स तो आने चाहिए ना. आई स्पीक वेरी लेस हिंदी, डोंट वरी इन माई सेशंस. Great. Yes, yes, yes. Everyone is saying that yes, ma'am, definitely there is a section 160. I'm glad you're mentioning the section number as well, where other persons also get a right to apply or to stand for directorship. But ऐसे में क्या किया हुआ है? For screening out the serious applications, any person who is not the retiring director, that means persons other than director, they will be eligible for appointment provided you give a notice to the company, right? Not less than 14 days before the meeting आप notice भेजते हो. That notice has to be accompanied with deposit of 1 lakh or higher amount as may be prescribed. वो deposit refund हो जाता है if you get more than 25% of valid votes. Very good. Okay, the company shall at least 7 days before the general meeting inform the members of the candidature and the intention कि हाँ this particular person wants to become the director of the company by serving them notices and thereafter. अच्छा, एक बात और, एक सवाल मेरा और आपसे. Come on everyone, I'm asking you one more question. Section 160 is not applicable to a certain type of company. Which type of company? Section 160 is not applicable to which type of company? But it is refunded. Very good, very good. Section 160 is not applicable to which type of company? बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ. Government company, Nihar Nayak. So happy to know the answer. Private company, Kajal. Private company, government company, subsidiary of government company. Okay. अच्छा, एक बात और बताओ मुझे कि मान लो आई वांट टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ऑल्टरनेट डायरेक्टर मैं अपॉइंट करना चाहती हूँ, तो क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर जिसको मैं प्रपोज करती हूँ उसको भी 1 लाख का डिपॉजिट देना पड़ेगा? ऐसा कुछ है क्या? इफ आई वांट टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, यू नो सेक्शन 161 जिसमें बहुत सारे तरीके के कैजुअल वैकेंसी आती है. हमारे एडिशनल डायरेक्टर आता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर आता है, नॉमिनी डायरेक्टर आता है. वी हैव 4 सबसेक्शंस एंड ब्यूटीफुल 4 सबसेक्शंस, राइट? तो क्या उस केस में भी ओके? आकाश गुप्ता इज सेइंग नो, कानिका गुप्ता इज सेइंग नो एंड आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स. विशाल नो 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 नो, सब बच्चे कह रहे हैं नो. कुछ एक आध बच्चे यस भी कह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा. हम एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर किसी की भी बात करते हैं बेटा, दे आर रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, राइट? तो यहाँ पे वो केस नहीं आता है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स जो जीएम में अपॉइंट होते हैं. ओके, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज टाइप ऑफ डायरेक्टर्स. चलो, वेरी गुड. Moving to next question, question number 10. How merger and amalgamation be put into effect under section 233 of Companies Act 2013? Right? Section 233 की अगर हम बात करें तो स्मॉल कंपनी के मर्जर के लिए है. इट हैज़ अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कि 2 और मोर स्मॉल कंपनीज हैं या एक होल्डिंग अपनी होली ओन सब्सिडियरी के साथ मर्ज होना चाहती है. सच अदर
such other class of companies as may be prescribed. Nandu, again, I would say that I am using more of English language only, so you'll easily be able to understand. Okay, right, fast track merger. Okay, तो इसमें क्या करना होता है भाई, छोटा सा प्रोसीजर है. वी सेंड द नोटिस इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस, कि अगर कोई ऑब्जेक्शन एंड आफ्टर कंसीडरिंग द नोटिस वी हैव 90% ऑफ द कंसेंट एंड देयर आफ्टर द मर्जर इज अप्रूव्ड. राइट, वेल डन. ओके, चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. FDI is prohibited in which sectors? I think we have already, you have already told me this at that time also. तो क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं हम. अच्छा, सम स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट द PDF कि ये पर्टिकुलर PDF कहाँ से मिलेगा मैम. आफ्टर द सेशन यू विल फाइंड दिस PDF. विल शेयर इट एज SAP on our Telegram channel. Okay, the link will be pinned in the comments. You can get that. Question number 12. ये बड़े ध्यान से सुनो. It is a case study. There are 4 directors in Shine Paper Limited. Okay, there are 4 directors in Shine Paper Limited. Mr. Madhav, being the director in station, has been authorized to draw and endorse check and other negotiable instruments on account of company and also to direct. ये क्या कर रहे हैं मिस्टर माधव? एक डायरेक्टर है. He draws and endorses check and also to direct registration or transfer of shares, signing the share certificates. ये सब काम करते हैं. Can he be treated as the managing director of the company? Come on everyone. सबसे पहले तो इसका आंसर दो. Although you will not start with the conclusion, you don't have to say that yes, he can be treated as the managing director of the company or not. पहले हम क्या लिखते हैं? First we write the provision and thereafter we have to conclude. ओके, तो पर आपसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या इनको मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं या नहीं. वी हैव अ सेक्शन 2 क्लॉज 54 जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर की हम डेफिनेशन देखते हैं. वी चेक द डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. No, he cannot be treated. Why? Because managing director हम उसको कहते हैं who has the substantial powers of management, and it has been clarified that substantial powers will not include the power to affix common seal, the power to endorse negotiable instruments, the power to sign on share certificates or to direct registration. Right, these are administrative acts which may be done by anyone. Having the power to do such administrative acts does not mean that you have the substantial powers of management, and hence you cannot be treated as managing director. मैम शाम में हल्दी दूध पी लेना, कल से सब ठीक हो जाएगा. आपको कल भी हम. थैंक यू सो मच आकाश. आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट आई कैन. मैं कल से हल्दी दूध और काढ़ा और गार्गल और स्टीम और सब कर रही हूँ, वट एवर इज पॉसिबल. ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न. चलो, बहुत बढ़िया. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. PBX Private Limited is a company in which there are 6 shareholders. ये particular question हमारे MTP का ही question है. In fact, I discussed it with you, so I will be a little quick in that. Mr. Bala, who is a director and also the legal representative of deceased shareholder, holding not less than 1/10 of the share capital of the company, made a petition to tribunal for relief against oppression and mismanagement. Examine whether his petition is maintainable or not. Okay. तो कुछ मेंबर्स के पास हैव द राइट टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 241. किसके पास राइट होती है? दैट इज गिवन इन सेक्शन 244. हु हैज द राइट टू अप्लाई? Not less than 100 members or not less than 1/10 of the total number of members. There are in total 6 shareholders, है ना? 6 shareholders हैं, not less than 1/10. 1/10 of 6 comes out to be 0.6. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 आएगा. तो इवन 1 member has the right to apply, है ना, for this petition of oppression and mismanagement. यहाँ पे it doesn't matter कि आपके पास 1/10 of share capital से कम है. It doesn't matter. Okay? So yes, it is maintainable. You will write the entire provision and then you will say yes, it is maintainable. Okay.
when a foreign company is treated as Indian company. क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है that we're treating the foreign company as Indian company? The answer is yes. हमने deemed वाला concept पढ़ा है ना. The answer is yes. Not less than 50% of paid up capital. क्या हो? It is held by one or more citizens of India, or by one or more companies which are incorporated in India, or a combination, right? तो अगर ऐसा है, then it will be treated as if it was a company incorporated in India. ठीक है, तो डीम्ड वाला कंसेप्ट, बिल्कुल डीम्ड वाला कंसेप्ट लगाना है और ये हमारा प्रोविजन क्लियर हो जाएगा. Okay, moving to the next question. Question number 15. What is the object of forming IRDA? Also explain the powers and functions of IRDA. देखो जनरली हमारी इंश्योरेंस एक्ट से अगर कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो वी हैव सर्टेन थिंग्स, कॉजा प्रॉक्सिमा, ठीक है, इस टाइप के जो हमारे एक शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये जो टर्म्स हैं, दे आर वेरी पॉपुलरली एंड वेरी कॉमनली आस्क्ड. देन वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज IRDA. तो IRDA जो अथॉरिटी होती है उसके बारे में हमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लाइफ इंश्योरेंस, की लाइफ इंश्योरेंस वाला वो जो चीज आती है वो हमसे पूछता है. सो वी हैव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली विच आर यूजुअली आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंश्योरेंस एंड IRDA. राइट, अब एडा में पूछा गया है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. सो वी हैव द ऑब्जेक्ट दैट इट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस होल्डर्स और पॉलिसी होल्डर्स, यू वुड से, टू रेगुलेट, प्रमोट द एंटायर इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड कनेक्टेड मैटर्स. फाइन. अगर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं. हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे कैंसिल ऑल्सो, दे सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, दे कंडक्ट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, दे लेवी अ लॉट ऑफ फीस on everything, right? Margin of solvency regulate करते हैं, they settle the disputes, right? They determine the qualifications कि जो एजेंट होगा उसके ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस होने ही होने चाहिए. जो सर्वेयर आएगा, जो साइट को इंस्पेक्ट करके रिपोर्ट बना के देता है, एंड देयर आफ्टर द क्लेम इज बीइंग पास्ड, उस सर्वे उस सर्वेयर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो बीइंग टोल्ड बाय दिस एक्ट के. हाँ, ये उनके फंक्शंस है, ये उनकी पावर्स आती है, राइट? ट्रेनिंग ऑफ एजेंट्स, ग्रीवियंस रिड्रेसल, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेटलिंग डिस्प्यूट्स. चलो, वेरी गुड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनालाइज इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट द रोल ऑफ SFIO. SFIO in investigation into the affairs of the company. SFIO, Serious Fraud Investigation Office. भाई सीरियस फ्रॉड करते हैं तभी ये आते हैं पिक्चर में, तभी ये इन्वेस्टिगेट करते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, वी हैव रेड दिस चैप्टर इनटू फेजेस एक्चुअली, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, राइट? ऑल दीज थ्री टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, है ना? कब इंस्पेक्शन हो रहा है, कब इंक्वायरी हो रही है और क्या इन्वेस्टिगेशन है, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, राइट? तो पहले अगर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है रजिस्ट्रार की, उसके बेसिस पे लगता है नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, है ना? तो क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, या फिर कंपनी SR पास करती है, कंपनी के मेंबर्स को लगता है हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है ना? तो उस सिचुएशन में SR पास होता है, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करे या पब्लिक इंटरेस्ट में उनको लगे, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट व्हाट दे कैन डू इज, यस, सेक्शन 212, वेरी गुड, दे कैन इन्वेस्टिगेट. ठीक है, जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं SFIO, तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे होते हैं वो सारे के सारे होल्ड पे चले जाते हैं. And all the employees, all the officers, they have to provide assistance. SFIO submits the report to central government, and after examination of that report, वो ये भी बोल सकते हैं to initiate prosecution, कि भाई इनके ऊपर अब कार्रवाई शुरू की जाए. ठीक है, अभी आपने इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ऐसा है, तो प्रोसिक्यूशन. ठीक है, तो फिर केस क्रिमिनल का वो जो भी हमारी कंप्लेंट होती है उसके बाद काम शुरू होता है. ओके, यस, दे ऑल स्टॉप. कितना सही आप लोग लिख रहे हो. मैंने कौन सी हिंदी बोली पूरे क्वेश्चन में, इंग्लिश. नाउ आई एम स्पीकिंग. हाँ, ओके, चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे मैं जा रही हूँ ना, प्लीज एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोग सुनो. व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन. स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर द एक्ट. दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर 2016 एंड 2022 सिलेबस. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि 2022 सिलेबस में आपके रूल्स इनकॉर्पोरेट हुए हैं, एंड व्हेन द रूल्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड यू हैव एग्जैक्टली द लिमिट which has been prescribed. तो आपको पता है कि हाँ इतने से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना है. आई हैवंट इनकॉर्पोरेटेड द एंटायर आंसर बट यू शुड नो. आपको पता होना चाहिए, मैंने ये भी यहाँ पे पढ़ा है, सो आई हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट ऑल्सो इन माई आंसर. ओके, so offense of money laundering is common for both. Let me see how many of you can actually write the definition. कौन कौन लिख सकता है? लिख सकते हो. सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए क्या बोलता है? व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? Whosoever directly or indirectly attempts. Anyone who remembers this particular definition, can anyone write it? Okay, somebody is telling me the stages of money laundering: placement, clearing, integration, cognizable, schedule A, B, C, offense. Attempts, indulge directly or indirectly. Very good. Or knowingly assist, or knowingly is a party, or is actually involved in the process of. कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख रहे हो. मुझे लग रहा है सारे बच्चे मिलके अगर आंसर लिख देंगे ना तो आंसर बन जाएगा. कितना अच्छा होता ना एग्जाम में, ऐसे होता कि ग्रुप आंसर्स हम लिख सकते हैं, लाइक वी डू ग्रुप स्टडीज. तो मैं भी चलती साथ में, हम लोग मिलके लिख के आते सारे आंसर्स. ओके Fine. So you have to explain the meaning of money laundering, and thereafter her reporting entity का बहुत contribution होता है in this entire process, because they have the obligation. So every reporting entity is obligated to maintain a record of transactions of such nature and value as prescribed, right? You also have to furnish a report of the same to FIU, Financial Intelligence Unit, right? You have to maintain the record of identity, evidencing of your clients, right, and the beneficial owners. And whenever your business relationship ends, after that for 5 years you'll still maintain the record, and thereafter you can discard that record. So reporting entity undoubtedly plays a very important role in the entire process, because that is the channel. Because what is reporting entity? It is the banking company or the financial institution through which this money laundering actually takes place, right? Chalo. चलिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. XYZ Limited secures residential accommodation for the use of its managing director by entering into a license arrangement under which the company has to deposit a certain amount with the landlord to secure compliance with the terms of license agreement. Can it be considered as a loan to a director? Discuss with reference to Companies Act. एक कंपनी है which secures residential accommodation, जो कौन यूज करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर. by entering into a license agreement जिसमें company has to deposit a certain amount with the landlord to secure compliance with the terms of license agreement. Can it be considered as a loan to director? क्या ये लोन है? और अगर ये लोन है तो क्या लोन के प्रोविजंस क्या होते हैं? क्या लोन दिया जा सकता है डायरेक्टर को? Can loan be given to a director? Company in general cannot lend loan to a director, right? As per section 185, हम loan नहीं दे सकते directly, indirectly. We cannot give loan to a director. Fine, that is okay. But in certain situations, the restriction does not apply when it is a part of condition of service which is extended to all the employees in general, or it is in pursuant to any scheme. तो यहाँ पे अगर बात करें तो दिस इज नॉट समथिंग विच यू आर गिविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर. ये एक फैसिलिटी के अगेंस्ट आप एक्सटेंड कर रहे हो, विच in general, because that is the arrangement that you yourself are providing, right? So it will not be treated as the loan to director. It does not amount to loan.
Moving to the next question. Again, एक छोटा सा question number 19. It is a case study, but it is a very small question that we have to deal with. Managing Director of PQR Limited himself wants to appoint Shri Ganpati, a practicing chartered accountant, as first auditor of the company. Comment on the proposed action of Managing Director. So we have a Managing Director, और वो Managing Director इतने काबिल हैं कि सोच रहे हैं कि मैं खुद ही सीए को अपॉइंट कर दूं. मैं जानता हूं, मेरा दोस्त है, एक सीए को पकड़ के ले आते हैं और फर्स्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर देते हैं. इज इट वैलिड और इज इट नॉट वैलिड? क्या ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं? कैन ही अपॉइंट और कैन ही नॉट अपॉइंट? उनको पता है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होता है, वी ऑल नो दैट द फर्स्ट ऑडिटर्स, सॉरी डायरेक्टर की बात करें, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, विद इन 30 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 30 days के अंदर अंदर हम क्या कर देते हैं, पहले ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं. तो उन्होंने कहा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर में है तो कर देते हैं. एक्सीलेंट, आई एम सीइंग एवरीवन राइटिंग द करेक्ट आंसर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर अलग अलग होते हैं. Just because you're a managing director doesn't mean you are equivalent to board of director. You're beneath the board of directors, right? तो board of directors के पास power होती है. No individual director has the power to appoint the auditor, and hence he cannot appoint the first auditor of the company himself. Moving to question number 20. Question number 20 is about Competition Act. Discuss about the acts taking place outside India but having an effect of competition in India. हमको पता है कि भाई जो agreement, anti-competitive agreements we read about in section number 3. We also read about abusing of dominant position. We also read about the combinations which exceed the threshold, right? तो उन सबको if they are having adverse effect on competition, ये करो वो करो, ऐसी वैसी चीजें हमने बहुत सारी पढ़ी. But if some act is taking place outside India, और let's say for example combination है, एक यहाँ की entity है, एक बाहर की entity है, so that is combination, right? Or maybe we can say कि कुछ dominant position abuse हो रही है outside India, or maybe we are entering into an agreement where one party is outside India. It is an anti-competitive agreement, but one party is outside India. So can it still be considered? The answer is yes. क्योंकि हमारे लिए important होता है relevant market, right? What is important for us is relevant market. कहाँ हो आप लोग? मेरे ख्याल से अभी आप लोग पिछले क्वेश्चन पे ही हो क्या? सी whatever is happening outside India, still the Competition Commission of India, CCI, still has the power to inquire into such agreements which also take place outside India if they have an appreciable adverse effect in the relevant market in India. CCI may take into consideration if there is appreciable adverse effect, right? So what you have to remember is appreciable adverse effect in relevant market in India, and thereafter CCI can pass orders even for the acts which are taking place outside India if they affect the relevant market in India. ठीक है? Question number 21 is general list of powers of central government to prevent oppression and mismanagement. तो ये मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको. सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारे पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल करता है ये पर्टिकुलर सबसेक्शन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस: एनी पर्सन मैनेजमेंट गिल्टी ऑफ फ्रॉड, business not conducted with sound principles, management conducted in many injuries to the interest of trade or industry, and the business is carried out with the intention to defraud the creditors. So ये एक जनरल सी छोटी सी चीज़ है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना. And we move to question number 22, which is again an interesting case study, and everyone has to focus very carefully और उसके बाद आंसर करना. प्लीज भटकना नहीं इधर उधर. Come on, everyone, read the question. Mr. R holds directorship in 10 public companies and 11 private companies as on 31st May 2019. You have to remember what is the maximum number of directorship. Maximum number of directorship कितनी होती है? One of the above private company is a dormant company. मतलब 10, अरे ये क्या हो रहा है?
10 पब्लिक, 10 प्राइवेट और एक डॉर्मेंट प्राइवेट, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। सो फार हमने इतना देखा. नाउ apart from the dormant company, on 30th June 2019, a private company has become a subsidiary of the public company. मतलब इसको छोड़ दो, ये हमारी situation थी on 31st May 2019 and now we move to a situation on 30th June 2019. तो इस समय 11 public companies हो गई, 9 private companies हो गई. How come, ma'am? Because when a private company becomes the subsidiary of a public company, it is deemed a public company and it has to comply with all the provisions of public company, है ना. तो वो deemed public company हमारी बन गई, तो वो public company की कैटेगरी में चली गई, और एक तो डॉर्मेंट है ही है. तो हमसे पूछा जा रहा है the validity of holding directorship on this date as well as this date, right? Great. 31st May 2019 it is valid and 30th June 2019 it is not valid. तो एक दिन वैलिड है और एक दिन, मतलब ये वाला वैलिड है और ये वाला वैलिड नहीं है, बिकॉज द अपर लिमिट इज 20 एंड यू हैव 10. मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज कितनी हो सकती है? 10. इट कैन नॉट बी मोर देन दैट, राइट. चल, वेरी गुड. ओके, now we move to question number 13. Question number 13 actually ये नहीं है, it is about the definition of related parties. So related parties की definition आपको याद होनी चाहिए in the matter of corporate debtor for IBC. I am not taking up this question at all because you should remember this, और ये एक ऐसी चीज़ है which cannot be dealt like this, है ना. Moving to next question, question number 24. ये क्या हो गया? Financial Intelligence Unit, Enforcement Directorate, Operational Debt and Nominee Director. So you have been given 4 topics over here. Write short notes on. अब आप बोलोगे कि मैम शॉर्ट नोट्स तो अब उसमें नहीं पूछता है, तो इसमें पूछता है, उसमें नहीं पूछता है, ऐसे घुमा के पूछता है, ऐसे पूछता है. When we talk about the case study also, which is there in new syllabus, तो लास्ट में आपसे ना केस स्टडी आपके ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस एक्ट की केस स्टडी है बट उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक क्वेश्चन डाल दिया, या उसमें डाल दिया कि ऑडिट कमेटी के बारे में बताओ, तो वो अलग से केस स्टडी आपसे पूछ रहे हैं. ओके, इट इज नॉट जस्ट ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक, सो आपसे उसी में बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो, राइट. लेट्स सी एंड लेट्स इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली बी आउट विथ सम नोटिफिकेशन फॉर दिल्ली. प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. देखो क्या होता है अभी, है ना. अभी हम अपना काम करते हैं, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा. In fact, we'll have to check for that. Okay, now Financial Intelligence Unit. Come on, everyone. Financial Intelligence Unit, Enforcement Directorate. अभी नहीं बेटा, अभी नहीं. Let's see what happens. अभी उस पे फोकस मत करो प्लीज. चलो अच्छा ठीक है, लेट मी सी. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन तो केस स्टडी है ये वाले, तो आप फिर भी लिख लोगे. मैं कल का सेशन आपके साथ जो लूँगी उसमें मैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी. आज भी मैंने आपको बताए हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए हैं. इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चंस की मैंने आपको अलग फाइल दी है. आईबीसी के आपको एमसीक्यू ज़रूर करने चाहिए, बिकॉज दे हैव बीन स्पेसिफिकली डिजाइंड, और वो पर्टिकुलर कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए. दैट्स वाई आई हैव गिवन यू एंड दैट्स वाई आई एम नॉट इनकॉर्पोरेटेड मेनी क्वेश्चंस ऑन आईपीसी. एक आधी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है. रुक जाओ यार, रुक जाओ प्लीज. लेट्स फोकस. इट्स द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग. उसके बाद वैसे भी आई रैप अप द सेशन, ठीक है. उसके बाद देखा जाएगा. Universal, a foreign company incorporated in Australia, was carrying on its business in Delhi related to manufacturing of automobile parts. अच्छा, again this is a question of MTP जो मैंने आपको कराया हुआ है. I hope you all have seen my MTP session.
Due to failure of its compliance with the respective law of the country in which it was incorporated, it was ceased to exist. Decide in the light of Companies Act the status of the company and effect of its conduct in business in India. तो भाई अगर कोई कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में बनी थी, ऑस्ट्रेलियन लॉज के हिसाब से उसने कुछ फेलियर किया और वहां पे वो बंद हो गई, तो यहाँ पे जो उसकी ब्रांच थी विच इज ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी, तो यहाँ पे उसका क्या स्टेटस रहेगा. दिस इज अ टॉपिक विच कम्स एज वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी. सो डेफिनेटली यहाँ पे भी वाइंडिंग अप होगी, बट इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड कंपनी ओवर हियर, सो इट विल बी वाइंडिंग अप ऑफ एन अनरजिस्टर्ड कंपनी फॉर विच वी हैव अ सेपरेट पार्ट, राइट. सो उसके येस इट विल डिजॉल्व एज एन अनरजिस्टर्ड कंपनी. इंटर के लिए भी आई हैव पुट अ लॉट ऑफ सेशंस. इनफैक्ट मैंने सुपर 30 ऑलरेडी इंटर के लिए दिया हुआ है, मुकेश अग्रवाल. यू कैन चेक ऑन आवर यूट्यूब चैनल. आई एम रैपिंग दिस सेशन हियर इटसेल्फ. मुझे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, बट टुमारो जो हमारा कल, आई थिंक इट्स शेड्यूल्ड एट 2 PM. आई थिंक नहीं, पक्का 2 बजे ही शेड्यूल्ड है. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी देयर फॉर द सेशन. उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर टू टेल यू फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन, मतलब आपके एग्जाम के लिए ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच साहिल. आई विल डेफिनेटली टेक केयर. और कल एकदम फुल ऑन और जोश के साथ हमें आना है एंड हमें अपना पूरी की पूरी पढ़ाई को रैप अप करना है बाय टुमारो फर्स्ट हाफ. आई वांट एवरीवन टू प्लीज़ 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 कंप्लीट ऑल योर रिविजन. कल फर्स्ट हाफ तक आपका सारा CMA फाइनल लॉ का रिविजन हो जाना चाहिए, बिकॉज टुमारो विल हैव अ सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, डिटेल्ड इधर उधर से आते हैं, तो वो आपको फटाफट से आंसर करने हैं मेरे साथ. यू हैव टू बी देयर विद मी एंड देयर आफ्टर आई विल ऑल्सो पुश अ वीडियो फॉर सम लास्ट मिनट वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको बताया है, तो आप वो ज़रूर देख लोगे. Yes, it is correct, Shri. Tomorrow session is at 3 p.m. चलो 3 p.m. जो है सेशन वही होगा. आई थिंक आई एम मिस्टेकन. प्लीज़ यू चेक द सेशन इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड. मेरी बातों पे मत जाना. चेक द टाइमिंग एंड देयर आफ्टर यू कम. थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स मैम. आई एम सो हैप्पी दैट यू एक्नॉलेज. आज शायद मेरी थोड़ी एनर्जी लो थी, बट चलो टेलीग्राम पे PDF दे देना मैम. येस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शेयर दैट PDF ऑन टेलीग्राम. थैंक यू एवरीवन. बस यार मेक मी प्राउड फॉर दो एग्जाम में, ठीक है. Okay, everyone, so I'm wrapping up the session here itself. Thank you, and all those who haven't liked the session, like करके जाना.